अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने इन्वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स शुरू किए थे और इसमें बैरो रिसेप्टर्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी थी और उसके बाद हम कीमोरिसेप्टर्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें कीमोरिसेप्टर्स respond to chemicals and oldest and universal sense in animal kingdom. Protozoa has avoidance response to acid, alkali and salt stimuli, and they present in depressions or pits in the aquatic invertebrates. ये हम इस पे बात कर भी चुके हैं पहले। उसके बाद जियो रिसेप्टर्स हैं। जियो रिसेप्टर्स, जियो मीन अर्थ, respond to the force of gravity, and this gives an animal information about its orientation relative to up and down. Most georeceptors are statocist, or you can say these are bladder-like structures, or you can say these are specific bodies present in the body. उसके बाद और ये नॉर्मली इन पिट्स छोटे छोटे डिप्रेशंस हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइग्रो रिसेप्टर्स हैं। हाइग्रो जब भी कहीं वर्ड आता है तो इससे हमारे जहन के अंदर moisture या water आता है। So detect the water content in the air. For example, some insects have hygroreceptors that can detect small changes in ambient relative humidity, जो natural humidity है उसको detect करते हैं अपने habitat को देखने के लिए, environment को। This sense enables them to seek environments with a specific humidity or modify their physiological behavior with respect to ambient humidity। जो नेचुरली ह्यूमिडिटी उस वक्त एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर पाई जाती है, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके मुताबिक अपनी फिजियोलॉजी को भी चेंज करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो डेफिनेटली वो वाटर को बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं, अगर कम है तो वाटर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। एंड मैनी अदर डेसिकेशन से बचने के लिए बहुत सारे इकदाम करते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अपने आप को बचाते हैं, किसी रिट्रीट में चले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास फोनोरिसेप्टर्स हैं, which are involved in hearing, and true phonoreceptors that respond to sound have been demonstrated only in insects, arachnids and centipedes, although other invertebrates seems to respond to sound, including vibrations of the substratum. For example, crickets, grasshoppers, and cicadas possess phonoreceptors called tympanic or tympanal organs. बहुत तेज झींगर वगैरह जो आपने देखा बहुत तेज आवाज़ निकालते हैं और इस तरीके से ये डिटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट जो हैं वो भी आवाज़ निकालते हैं। कुछ ऐसे होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुन नहीं सकते। हमारे जो ईयर है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो उसको डिटेक्ट कर सके, उसकी जिसको आप कह लें कि रेंज वो नहीं है कि जिसमें वो। अदरवाइज बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने देखा है कि जो माइक है कैमरे का वो आमतौर पे जो साउंड्स हमें इंसेक्ट की नहीं भी सुनती, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि स्पाइडर वगैरह की साउंड्स, तो वो कैमरा माइक जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स फोटोरिसेप्टर्स हैं which detect the you can say light or animal respond to a change in the light.
Flagellated protozoa possess a mass of bright red photoreceptor granules called stigma. Earthworm has simple unicellular photoreceptors cells scattered over the epidermis. Annelids and molluscan possess ocellus. It is simple eye of insect and some others. So same is invertebrate. Invertebrate consisting basically of light sensitive cells. Compound eyes sometimes present in the arthropods like insect, crustaceans, millipedes are composed of units called ommatidia. बहुत छोटी छोटी units होते हैं, जैसे आप कह लें कि बहुत सारी smaller eyes हैं जो मिलके compound eye बनाते हैं, और ये this is the you can say characteristic of arthropods. An ommatidium contains a cluster of photoreceptor cells surrounded by जो इर्द गिर्द से घिरी हुई होती है. स्पोर्ट सेल्स एंड पिगमेंट सेल्स इनके इर्द गिर्द जो हैं वो होते हैं. तो इनवर्टिब्रेट फोटोरिसेप्टर्स में इंसेक्ट खास तौर पे उनमें आइज आपने देखा बड़ी बल्जिंग आइज होती. इसके अलावा अगर आपने स्पाइडर्स की आइज देखी हो विच आर नॉट कंपाउंड आइज, समटाइम्स सिंपल आइज होती हैं और हैविंग ए लेंस, और बहुत बल्जिंग होती हैं, बहुत एक्टिव, बहुत यू कैन से एफिशिएंट आइज होती हैं. और क्योंकि प्रेडेशन करनी होती है, टोटल लाइफ उनकी जो है वो फूड प्रेडेशन पे डिपेंड करता है. तो जो भी इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड जो प्रेडेशन पे डिपेंड करता है और एनी अदर एनिमल्स जो प्रेडेट करता है, उसकी आइज जो हैं वो जो जितनी भी उसके सेंसेस उसमें आइज सबसे ज़्यादा डेवलप होती हैं. सो इसके बाद हमारे पास फोटोरिसेप्टर्स में आर द सेल्स इन द रेटिना that respond to light. Their distinguishing feature is the presence of large amount of tightly packed membranes that contain the photopigment rhodopsin or a related molecule which can detect the light. Proprioceptors ये receptor जो है sensitive receptor in the muscle joint, capsules and surroundings tissue that signal information to the central nervous system about position of the or you can say animal and movement of the body parts. For example, the angle at a joint or the length of a muscle. Tactile receptors are basically touch receptors. Most tactile receptors involves the projection from the body surface. जो बॉडी सरफेस से जो प्रोजेक्ट की हुई हैं चीज़ें वो डिटेक्ट करती हैं. आमतौर पे आपने देखा होगा कि इवन एंटीना वगैरह या ऐसी सरफेसेस जो हैं वो जो हैं वो एज ए टैक्टाइल रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं. सो प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं वो जो डिफरेंट पोजीशन है, अगर अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट, राइट, उसको डिटेक्ट करते हैं एनिमल्स की. Tactile receptors are sensory receptors which respond to touch in the glabrous skin without hairs, जिसे हम कहते हैं, of the hand. We have 4 types of receptors. One is the Meissner, Merkel, Bassinian, and Ruffini. That is for the human being. The former 2 are located just under the skin, while the later 2 are located deeper. All 4 have highly specialized encapsulated ending, as you can see from the figure. In the hairy skin, Meissner capsule are replaced by hair follicle. जहाँ पर hair है वहाँ hair follicle जो है वो काम करते हैं as a receptors. Thermoreceptors are able to detect heat and cold and are found throughout the skin in order to allow sensory reception throughout the body.
सो हीट को डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर के अंदर कितना डिफरेंस है, not only heat but heat and cold, so that animal can manage its position or its body temperature accordingly, especially for endothermic animals or the animals which are having the you have to maintain their body temperature. They just respond to the thermoreceptors more, which are birds and mammals, and even insects during their active life respond to the heat or cold, and sometimes they go to the retreat, sometimes they just have a sun bath also, though they are ectotherm or the heterotherms. Then is the sensory receptors of vertebrates. Thank you very much students. ये हम अपने next lecture में करेंगे ताकि आपकी वीडियो लेंथ भी छोटी रहे और हम इसको जो है वो बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड भी कर सकें. सो बी रेडी फॉर द एग्जाम. मैं बार बार आपको कहता हूँ और इसको साथ साथ करते जाओ.